Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss a very important topic, the difference between sentence and fragment. So it is a very basic concept which needs clarity क्योंकि अगर आपको ये फ़र्क पता चल रहा है कि सेंटेंस और फ्रेगमेंट में क्या फ़र्क होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस जनरेट कर सकें अपनी राइटिंग में स्पेशली. So in order to know what is the difference between sentence and fragment, we need to know that what are the basic requirement of a sentence. A sentence basically is a group of word which needs three elements to put together. So जहाँ पर भी ये तीन elements आपको इकट्ठे नज़र आएंगे, it means that is a sentence, that is an example of sentence. What are those elements? Number one is subject, the second is verb, and the third one is complete meaning. So, what is a subject? Subject is basically the performer or doer of the sentence. It's usually a noun or pronoun. So, in other words, we can say that in a group of words, wherever you found that a noun or pronoun is performing, that is the subject of that particular sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर जो जो भी काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. वर्ब क्या है? वर्ब इज़ बेसिकली द एक्शन इटसेल्फ. वर्ब की टाइप्स भी होती हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, लेकिन आपने सिर्फ ये देख लेना है कि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड में जो है वो काम क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है दैट इज़ द एक्शन और द वर्ब इटसेल्फ. The most important, and I would say that the most trickiest part of sentence structure is meaning. To find out कि complete meaning क्या है, because whenever we teach we get multiple questions frequently कि हमें कैसे पता चलेगा कि meaning जो है वो complete है या नहीं है. तो you have to ask one thing from yourself: is there any confusion or question after reading that statement? इसका मतलब ये कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली कंप्लीट सेंटेंस है. तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा, सब्जेक्ट मिसिंग हो, वर्ब मिसिंग हो या कंप्लीट मीनिंग मिसिंग हो, देन वी कैन से दैट particular example is not a sentence. Look at the examples of the sentence. Students should complete this task in an hour. They are coming to meet the president. You can notice that in all three examples, the subject is there, verb is there, and the complete meanings are there. There is no question or confusion would arise in your mind after reading these examples. Now, the next thing is, what is a fragment? So, if you know and understand the sentence or the requirement of sentence, आपके लिए फ्रेगमेंट समझना उतना ही आसान हो जाएगा. अगर आपको ये पता है कि सेंटेंस क्या होता है तो आपके लिए ये पता लगाना कि फ्रेगमेंट क्या होता है मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस नहीं है वो फ्रेगमेंट में चेंज हो जाता है. अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है या मीनिंग मिसिंग है तो वो जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस नहीं है वो बेसिकली फ्रेगमेंट है. फ्रेगमेंट्स इतने टाइप्स के हो सकते हैं कि जितनी टाइप्स की आप फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने आई हैव गैदर्ड सम ऑफ द एग्जांपल्स टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स and then to talk about that how can we change those fragments into sentences. Now look at the first example of fragment. Besides the building of the bank. It's an example of prepositional phrase, and we have already discussed the difference between phrase and clause in the previous lecture. So besides the building of the bank, अब ये एक फ्रेज है, ठीक है, prepositional phrase है जिसमें subject भी नहीं है और जिसमें verb भी नहीं है. How can you change it into a sentence? If you change it like that, besides the building of the bank, I am waiting for you. So I am waiting, you have added the subject and you have added the verb, or besides the building of the bank, it's it's an additional information about the location. So you have to see कि जो आप लिख रहे हैं वो actually sentence नहीं है, fragment है. Now let's discuss the second example, painting the main wall of the house. Now this painting is basically a gerund. So technically this is a gerund phrase. आपका जो ये phrase है वो gerund phrase है, लेकिन ये जो gerund है वो इसको लोग एज अ वर्ब भी समझ लेते हैं, बिकॉज आई एम पेंटिंग में पेंटिंग जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है.
but your knowledge of grammar must be strong enough that you can identify that the same form either it's being used as a verb or as a gerund. So painting the main wall of the house is a gerund phrase. अगर आप इसको sentence में change करना चाहते हैं तो you can say that painting the main wall of the house is done, or I am painting the main wall of the house. So आपने उसके अंदर subject, verb और meaning को ensure करना होता है. The next example is to see if he can understand my problem. Now you can see that this is not a phrase, this is a clause. Why this is a clause? Because you can see that इसमें subject भी है he और इसमें जो है verb भी use हुआ हुआ है understand. So but this is not, again this is not a sentence, it's infinitive clause because it's beginning with to. So clause को भी आपने जब complete करना होता है तो आपने उसके अंदर ensure करना होता है कि आपका subject verb और meaning सब इसमें हो. To see if he can, ये complete meaning नहीं दे रहा. So how can we complete it? I want to see if he can understand my problem, right? The next and last example is of dependent clause before you start your paper. Now you can see that again in this clause you have subject, you, and you have verb start as well. So you have subject and verb, but you don't have complete meaning. So it is a dependent clause, and it needs a dependent clause needs a complete and independent clause to be transformed into a sentence. तो आप क्या करेंगे इसको कि आप इसके साथ independent clause लगा सकते हैं. Like you can add read these instructions carefully before you start your paper. Or if you want to put the dependent clause earlier, you can write before you start your paper, comma, and then read these instructions carefully. So this is how you can transform a dependent clause into a complete sentence. So we have discussed today that how can we change, fragments into sentences. The last one is the relative clause, the notes that we prepared during the lecture. Relative clause के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो clauses हैं उसको most of the time students समझते हैं कि ये sentence ही है क्योंकि उसमें subject भी है और उसमें verb भी है और उसमें incompleteness का element जो है वो easily find out नहीं कर पाते unfortunately बच्चे. तो clauses most of the time I have seen that they consider it as a sentence और उसको change नहीं करते. हालांकि जब आप ये देखें the notes that we prepared during the lecture, so that we prepare actually रेफ़र कर रहा है the notes को. इसका मतलब ये है कि आपने अब बताना है कि वो नोट्स जो आपने लेक्चर के दौरान प्रिपेयर किए थे अब आप उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं. सो हाउ कैन वी मेक इट कंप्लीट? द नोट्स दैट वी प्रिपेयर ड्यूरिंग द लेक्चर आर इंफॉर्मेटिव, or I am reading the notes that we prepared during the lecture. So you have to use your knowledge of the language to transform all types of fragments into sentence. So thank you very much. That's all from my side.